Hello friends, today we will make chicken strips. I'll show you the ingredients. Let's come. Okay, this is the buttermilk. First, this is very important. So you can make like yogurt and blend it with some water. Chicken strips. This is flour. Chili paper. This is chili flakes, black pepper, cany pepper, and paprika. This is oregano a little bit, garlic powder, salt. So this is the ingredients right now. And I'll show you now what we need to do. Okay, one by one I'll show you. First, we will put all the chicken together in our butter chicken, but sorry, butter milk. They'll mix together one time. When this done, now what you need to do? You need to put little bit paprika, cany paper. Cany, if you don't like spicy, you can remove. This is up to you. Salt as per your taste. Garlic powder. This is very important. If you don't have in your home garlic powder, you can add little bit garlic paste. Chili flakes. Again, this is optional. This is our oregano. And last and final is our black pepper. So now you need to do mix nicely. You can use strong batter. See, now our mixing is done. Now we will keep this for 4 to 6 hours. Again, you can make same time, but if you marinate more longer, it's more flavorful and everything. So we will keep this in chiller for 2 hours. ये अब हम इसे बनाते हैं. I'll show you how to do this. Okay, take one by one strips. Simple. We will take two tong, or you can take one also, but I think better two. So what is the process? You need to take this, put it in flour, cover nicely. Okay, yeah, thus now you can see. So now what we will do after this, again we will put in water. We'll take out again and we will put again. And this is our product done. So I'll show you again one more time what we need to do. Simple, take one strips, put it in flour. And flour you can add little bit garlic if you like. Otherwise you can do direct also. Okay. This little hold the slowly. See, you can see one more time. Now we will put in water. This, take it from the water and finish. So there have coating kind of thing 2 times. Now again take, and this is ready. So this way you will finish all, and after we will start frying. ये अब हमारा ऑयल रेडी है इसमें. चलिए अब हम फ्राई करते हैं. टेम्परेचर नियर टू 160. वाह, ये जो कुक हो रहा है ये बहुत अमेजिंग लग रहा है. इसे ऐसे ही कुक करते रहना है हमें. इसकी क्रिस्पीनेस है, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप KFC का चिकन खा रहे हैं. और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान दें इसमें.
कि आपको मेनली इसको कुक अच्छी तरह करना है हमें। मैं आपको हल्का सा दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है ये। ओ सी, ओ माय गॉड। चलिए अब हम इसे क्रिस्पी होने देते हैं, इसमें अच्छी तरह कलर आने देंगे, जब तक कलर आता है, जब तक, क्योंकि इसका मेन वो है इसका कलर। और ये चिकन स्ट्रिप्स है तो ये कुक होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। तो अब हमें जब बस कलर आने देना है, और आप एकदम फील करेंगे जैसे कि किसी प्रोफेशनल ब्रांड का प्रोडक्ट है ये, जैसे KFC हो गया। और आप इसको जितना फ्लेवरफुल कर सकते हैं इसमें, और जितना भी हमारा फ्लावर है इसमें भी हम थोड़े मसाले डाल देते हैं, और अपना इंडियन स्टाइल करना है तो हम इसे उसमें भी कर सकते हैं। लेट इट कुक टिल गोल्डन ब्राउन। देखिए एकदम हमारा चिकन क्रिस्पी और गोल्डन फ्राई हो रहा है। इसको एग्जैक्टली 30 सेकेंड के आसपास और हमें कुक करना है, और फिर इसका आप देख सकते हैं। अब ये ऑलमोस्ट डन है, हम जस्ट इसको एक बार कलर दे रहे हैं कि हल्का सा कलर और आ जाए। उसके बाद हमारा चिकन एकदम रेडी है, ये देखिए आप। तो इसे हम थोड़ी देर कलर और दे देते हैं। फ्रेंड्स अब हम इसे प्रेजेंट करते हैं। हमने पहले सैलेड ले लिया प्लेटिंग के लिए, और आपको इसमें 3 ऑप्शन है, एक सैलेड, और उसके बाद आप चिकन इसमें लगा सकते हैं। 8 पीस दे दें आप अपने गेस्ट को, मतलब एक एक पोर्शन में 8 पीस के आसपास जाएंगे हमारे। ओह इट्स अमेजिंग रियली। और ये हम अपने सॉस के साथ सर्व करेंगे। अभी हमको दिखाते हैं पूरा फाइनल प्रोडक्ट कि कैसा होगा। ये देखिए हमारी प्लेट, और ये हमारा सॉस रेडी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, try with your family and friends and let me know how's the taste. Thank you friends to watching my